नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्रीनोवा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं समर्थ स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। तो आगे बढ़ते हैं समर्थ स्कीम के साथ। तो समर्थ स्कीम यानी समर्थ का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रिसाइड्यूज इन थर्मल पावर प्लांट। नाम सुनते ही आपको पता चला होगा कि ये स्कीम किस बारे में है। तो उससे पहले हम कंटेक्स्ट देखते हैं। तो हमें पता है कि क्रॉप रिसाइड्यू क्या है। फिर से देखते हैं। क्रॉप रिसाइड्यू मतलब प्लांट मटेरियल है जो आफ्टर हार्वेस्टिंग रह जाता है फील्ड में, यानी ये अपनी फील्ड, ये जो रिमेनिंग पार्ट इट इज़ कॉल्ड स्टबल। और क्रॉप रिसाइड्यू ये जो रूट मतलब अबव ग्राउंड सरफेस या बिलो ग्राउंड सरफेस का जो पार्ट रह जाता है उसे हम क्रॉप रिसाइड्यू बोलते हैं। तो वी नो दैट द रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली faces a major problem due to stubble burning. So let us mark the area and see the map. So हमें पता है पंजाब हरियाणा जो ये रीजन है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टबल बर्निंग होती है, और यहाँ का जो स्मॉग है वो दिल्ली रीजन को पोल्यूट करता है। तो स्मॉग क्या है? इट्स जस्ट स्मोक प्लस फॉग। ओके, ये ऐसी कंडीशन है जो causes air pollution and many more effects. सो हमने अभी कंटेक्स्ट देख लिया क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, द फार्मर्स वाई डू दे बर्न द स्टबल? सो पहले तो ये प्रोसेस क्विक एंड चीप है, क्योंकि बर्निंग इज जस्ट द फास्टेस्ट प्रोसेस rather than using any other method and cost nothing as compared to higher machineries. ठीक है, तो पहला है क्विक एंड चीप डिस्पोजल, क्योंकि ये फास्ट है। बर्निंग इज द फास्टेस्ट वे टू क्लियर द फील्ड आफ्टर पैडी हार्वेस्टिंग. इट कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग कंपेयर टू हायरिंग लेबर. सो उसके अगला वाला पॉइंट देखते हैं जो है नॉन रिम्यूनरेटिव, मतलब जो पैडी स्ट्रॉ है हैज़ नो न्यूट्रिएंट और लेस न्यूट्रिएंट. सो काऊ या फिर जो एनिमल है दे कांट ईट due to one major reason, it has high silica percentage. Next we go forward with the short window between the crops. मतलब इसका मतलब जो खरीफ सीज़न है जिसमें राइस और पैडी कल्टीवेशन होता है, और जो नेक्स्ट सीज़न रबी सीज़न है जिसमें मेजर ऑफ द फार्मर्स इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा डू wheat cultivation, the period between the harvesting of paddy and the sowing of wheat, it's just bit of 10 to 15 days. Therefore the farmer do not have much time to do the interculture operations, so they prefer burning of the stubble. Okay, then we can go forward with the next point, high cost alternatives. हाई कॉस्ट अल्टरनेटिव्स का मतलब जो लेबर है सीज़न देखो कौन सा चल रहा है, अक्टूबर वाला जो है हार्वेस्टिंग सीज़न, जिसकी वजह से लेबर शॉर्टेज रहता है.
Not every farmer can afford labor, and the second alternative, machinery, which is too complicated to manage in small land holding. ठीक है, और 2 पॉइंट लिख सकते हैं हम, जो कि और एक पॉइंट लिख सकते हैं जो कि लैक ऑफ अवेयरनेस रहता है. अवेयरनेस किस बारे में? कुछ फार्मर्स को बायोगैस, बायोफ्यूल का इम्पोर्टेंस नहीं पता, और जो ICAR ने लॉन्च किया है पूसा डिकम्पोजर, ये माइक्रोबियल सोल्यूशन है. वी हैव टू स्प्रेड दिस इन द फील्ड or the remaining stubble. It takes 20 to 25 days to fully decompose, so it's also time taking. Many of the farmers do not prefer or opt this system. So next, let's see the impact of stubble burning. First on environment. Environment पे क्या impact है? जैसे कि air pollution. Air pollution में क्या? It releases large amount of particulate matter, जैसे कि PM2.5, PM2.5 and 10, and also carbon monoxide, harmful gas like methane and other volatile organic compounds. The second environmental impact, it causes greenhouse gas emission. Greenhouse gases like CO2, the major as carbon dioxide, then again methane and nitrous oxide. These are the major harmful greenhouse gases. So it causes climate change, which directly impacts environment. Okay, the next impact is smog formation. We have seen what is smog. Smoke plus fog. तो स्मॉग क्या करता है? Especially in the region of Punjab, Haryana and Delhi, it reduces visibility and disrupt transport. Okay, so let's see the impact on human health. ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो पहला रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिसीजेस सच एज अस्थमा, bronchitis, lung infection and other allergies. It can also cause eye and skin irritation, because exposure to smog causes the severe pain and watering in the eyes, which can lead to redness. So it also impact on vulnerable groups like women, children, senior citizen or deceased person. So the next impact is on soil and agriculture. The major impact is loss of nutrient. So why loss of nutrient? Because burning से क्या होता है? Essential nutrient like NPK and other sulfur loses from the soil. Then organic fertility भी कम होती है, loss of organic matter loss होता है due to destruction of organic carbon. Okay, then soil structure कैसे impact होता है? Soil structure से it leads to crust formation. Due to burning, the upper layer of the soil becomes hard like a brick and reduce water holding capacity too, and also reduce indirectly productivity. Okay, then what is the economic impact for the farmer and the society? There is high demand for fertilizer due to loss of nutrients. न्यूट्रिएंट लॉस होने से हाई डिमांड रहती है फर्टिलाइजर की, विच रिड्यूसेस द पॉकेट ऑफ फार्मर. एंड वी नो ड्यू टू हाई डिमांड इट इंक्रीजेस इन्फ्लेशन. सो यहाँ इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होता है. देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन हेल्थ
कैसे, if we have any health related issues, it rises the health cost due to the stubble burning, which in turn reduces the pocket money or the savings of the farmer. How it impacts tourism and economy? It's the indirect impact due to smog formation, the disturbance in the air which causes impact on flights and overall economic productivity. So we go forward with the measures आप भी लिख सकते हैं, बहुत कॉमन मेजर्स है. एक बार वीडियो पॉज करके आप एक बार सोच लो. द फर्स्ट मेजर इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें स्टबल बर्निंग कम करनी है. जैसे कि हमें प्रमोट करना है रोटावेटर which will till the soil and turn the stubble into the soil. In situ मतलब on place residue management करना है through pusa decomposer. इसका हमें लार्ज स्केल यूज करना है. ओके, नेक्स्ट वी कैन डू वेहिकुलर एमिशन, रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, व्हीकल कैसे, वी कैन स्ट्रिक्टली फेज आउट ओल्ड व्हीकल को स्ट्रिक्टली फेज आउट करना है. देन प्रमोट ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पंप्स, सोलर हीटर्स. ओके, वी कैन एक्सपांड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, follow odd even system like Delhi. Also we can switch to CNG or clean fuels. Or we can focus on ethanol blending. और क्या मेजर्स लिख सकते हैं हम? और लिख सकते हैं अर्बन प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए. अर्बन प्लानिंग, सो वी कैन इंक्रीज ग्रीन कवर. एग्जाम्पल लाइक मियावाकी फॉरेस्ट, इट इज द जापानीज मेथड टू ग्रो अर्बन फॉरेस्ट विच soaks the carbon dioxide and other harmful gases. It acts like a barrier. So green cover बढ़ाना है हमें. उसके बाद we can use vacuums to clean the road for the road sweeper and sprinklers का यूज़ कर सकते हैं. We can create or install dust barriers. ओके, और हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं AQI, इसका मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम. ओके, एंड देन ऑल्सो वी कैन ट्राई टू रीच आउट टू द पब्लिक थ्रू पब्लिक अवेयरनेस. सो वी हैव इनफ मेजर्स. सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन क्विकली. सो हमने देखा क्रॉप रिसाइड्यू क्या है, जो लेफ्ट ओवर रहता है फील्ड का वो है क्रॉप रिसाइड्यू. रीजन, मेजरली रीजन अफेक्टेड ऑफ दिल्ली, पंजाब एंड यूपी. स्मॉग क्या है, स्मोक और फॉग जिससे एयर पोल्यूशन होता है. देन व्हाई दे बर्न स्टबल, क्योंकि एक क्विक प्रोसेस है जो फास्ट है और चीप है रादर देन मशीनरी और लेबर. सो हाई कॉस्ट अल्टरनेटिव, ड्यू टू हाई कॉस्ट अल्टरनेटिव जैसे लेबर, हार्वेस्टिंग टाइम रहता है अक्टूबर में, सो देर इज लेबर शॉर्टेज. देन मशीनरीज टू कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू स्मॉल और फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग. न्यूमरेटिव, नॉन न्यूमरेटिव क्रॉप, इट इज़ द नॉन न्यूमरेटिव क्रॉप. एग्जाम्पल पैडी स्ट्रॉ, लो फॉर्डर रहता है, काउ और एनिमल कैनॉट ईट ड्यू टू द हाई सिलिका कंटेंट. शॉर्ट विंडो गैप बिटवीन द टू क्रॉप, देयरफॉर due to the minimum gap they prefer burning is the simple process.
We can also try to write extra point like lack of awareness, such as biogas, biofuel, biodecomposer, microbial. The PUSA decomposer is the microbial solution which is used by farmers, which takes 20 to 25 days to decompose. Therefore, the time taken is too long. They opt burning. So there's an environmental impact such as air pollution. It releases carbon monoxide, methane, and other PM particulate matter gases. Then it also causes greenhouse gas emission and release the greenhouse gases, which in turn causes climate change and impacts on the environment. There are also smog formation, which reduces visibility and disrupt transport, whether it is road, air. Okay, the next impact is human health. Human health causes respiratory problems like asthma, bronchitis, lung infection, and other allergies. The next, eye irritation, causing redness and swelling. It also impacts the vulnerable groups, women, children, senior citizens, and diseased persons. The next impact is soil and agriculture. It also causes loss of nutrients, organic matter, and impacts soil structure, leading to formation of crust due to the burning. Also reduces water holding capacity and indirectly impacts the productivity. How economic impact? The economic impact through increased demand of fertilizer. The increased demand causes inflation and reduces the pocket of the farmer or saving of the farmer. Also impacts the health expenditure and also impacts the tourism of the country and also economy. So the measures must be taken. First, the agriculture technology, use of agriculture technology, use of rotavator. So it overturns the stubble into the soil, which act as the mulcher or mulching in the soil for the next crop. So we can also use PUSA decomposer on large scale, managing the sowing time. सेकेंड, व्हीकल एमिशन कम कर सकते हैं हम, जैसे कि ओल्ड व्हीकल को स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, ईवीज प्रमोट कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर पंप, सोलर हीटर्स प्रमोट कर सकते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट we can increase public transport, odd even system like Delhi. We can promote clean fuels like CNG and also ethanol blending. Then next we can try urban planning like green cover Miyawaki method, which is the Japanese method used for urban pollution, which soaks the measure of the carbon dioxide, which acts as a barrier. This method acts as a barrier. We can also set up vacuum and the sprinkler to soak the dust, or we can create the dust barriers and also strengthen the air quality index monitoring system. Also increase the public awareness about the mask and to tackle the pollution. So अभी जाते हम समर्थ सिस्टम स्कीम क्या है जानते हैं. तो पहले देखते हैं द फुल फॉर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रिसाइड्यूज एंड थर्मल पावर प्लांट. मतलब जो रिसाइड्यूज है, जो क्रॉप रिसाइड्यूज है, जो स्टबल रहता है, उसका यूज थर्मल पावर प्लांट में करना है. इट इज़ द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, to utilize agriculture residues for co-firing in thermal power plant. So जो agriculture residue है उसका use as a secondary fuel करना है. So the primary is the coal. So the primary fuel is coal. The use of primary plus secondary in thermal power plant. So यही है समर्थ स्कीम. It reduces the stubble burning and which causes pollution, reduces CO2 release in the air and the smog, and the health impact reduces. This scheme also promotes the research of modern boilers which can handle greater amount of silica and alkali in biomass pellets. The thermal plants must use 5 to 10% of biomass pellets with coal. So this is the win-win situation for the farmer and the power plants and the environment. If we want a stable ecosystem, the farmer must opt this system for agriculture. So
Follow us for more updates and other agriculture schemes like this. Don't forget to subscribe. Thank you.